I hope I am audible to you. 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 Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. So, good evening to all. Today we are going to start a antimicrobial agents or antibacterial drugs or antibiotics, and today it will be the first lecture of it, and antibacterial part is very important again for your GPAT Niper drug inspector pharmacist exam. So today we'll see the only primarily important aspects of your antibiotics, and tomorrow again we will start in continuation with that. Now pharmacology and industrial pharmacy as well as physical pharmacy, we are going to continue simultaneously for next month, and in between that also we'll try to complete jurisprudence. So today we are going to see antibacterial drugs, and if possible also sulfonamides. So pharmacology of antibacterial drugs, also known as antibiotics, also known as a chemotherapeutic agent. Antibiotics or antimicrobial agents or antibacterial drugs. So again very important chapter for your GPAT Niper drug inspector and pharmacist exam, right? So antimicrobial drugs or antibiotics. So we'll see some historical points before the starting of lecture कि एंटीबायोटिक्स तो आ चुके हैं 19th सेंचुरी में, है ना. अभी तो it is one of the very important drug, because antibiotics, discovery of antibiotics has changed the era of antimicrobial therapy, because before antibiotics there was only few drugs which was tried against the microbial infections, but after the emerging of antibiotics, the physicians so antibiotics has changed the therapy for the infection, right? So we'll see about the history of antibiotics first. So before 19th century, say for example 17th and 16th century, तो है ना 19वीं शताब्दी के पहले जैसे 17th century 16th century, उसमें कुछ कंपाउंड्स यूज किए जाते थे एज लाइक एंटीबायोटिक्स. सो हिस्ट्री, यूज ऑफ मोल्डी कर्ड by Chinese for treatment of boils. So Chinese people was using treatment of boil. So Chinese people was using a curd, moldy curd means curd with the fungus. जो आपका दही होता है उसमें जो फंगस है, ऐसा दही वाला फंगस वाला दही यूज करते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉइल्स. बॉइल्स मतलब क्या है? बॉइल्स मतलब kind of a infection that mostly occurs at your back, है ना. ये बॉयल जो होते हैं उसको गलू बोलते हैं मराठी में, और इसका इन्फेक्शन हो गया तो बहुत खतरनाक होता है ये. और तो चाइनीज वेर यूजिंग मोल्डी कर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बॉयल. तो इन द 16th century also we Hindus are also using, Hindus were using a चावल मोगरा oil for the treatment of leprosy. Hindus were using a चावल मोगरा oil for the treatment of leprosy. Chenopodium oil was used by acid people for intestinal infection. Then use of mercury
by the Paracelsus for the syphilis in 16th century. And in the 17th century, cinchona bark was used to treat the fever. So before 19th century, there was no antibiotic, and people were using a moldy curd or oil of various plants or some mercury compound for the treatment of infection. And in the 17th century, the cinchona bark was used for the treatment of fever by the Jesuit. That's why cinchona bark is known as the Jesuit bark. After that, the Paul Ehrlich found that certain dyes, certain colors, they selectively stain microbes. मतलब कुछ dyes है जैसे methylene blue, tryptophan red. So these dyes, Paul Ehrlich has observed that these methylene blue, tryptophan red, these dyes selectively stain microbes. मतलब ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्टेन होता है, ये मतलब ये इनको ही स्टेन करते हैं, क्यों करते हैं? And he tried that dyes in the infection, and he also developed some arsenic compounds for the sleeping sickness and for the treatment of syphilis. So Paul Ehrlich is known as the father of chemotherapy. आपको मालूम होना चाहिए, Paul Ehrlich is known as the father of chemotherapy, and he developed some arsenic containing compound for sleeping sickness and syphilis. Syphilis क्या होता है? It is a kind of infection. Syphilis is a STD, sexually transmitted disease. Sexually transmitted is caused by Treponema pallidum. और इसके ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये मैंने पहले भी बोला है. सो बिफोर 17th century, Chinese were using a moldy curd for treatment of boils. After that, Hindus were using a chaul mogra oil for the treatment of leprosy. Then chenopodium oil was used by acid people for infection of intestine. Then mercury compound was used by Paracelsus for the syphilis treatment in 16th century. And Jesuit used a cinchona bark for the treatment of fever in the 17th century. After that, Paul Ehrlich came and he tried some dyes. He found that certain dyes stain microbial organism, particularly methylene blue, tryptophan red, to a particular organism. So he tried in infection. He also developed some arsenicals for the sleeping sickness and syphilis. Right. After that, the modern era of chemotherapy. Okay, modern era of chemotherapy start with the Domack in 1935. Domack in 1935 explained the effect of prontosil dye. There was one dye used in the infection known as a prontosil dye. So he explained the effect of prontosil dye in the pyrogenic infection. Pyrogenic मतलब क्या? Infection which causes the fever. है ना? Pyrogenic infection मतलब infection which causes the fever. Fever करने वाले बैक्टीरिया. So Domack in 1935 explained the effect of prontosil in the infection of pyrogens, and Louis Pasteur in 1877 demonstrated first time the phenomenon of antibiosis. What do you mean by antibiosis? Anti means against, biosis means living organisms. तो antibiosis मतलब क्या है? Inhibition of, है ना? So it is a phenomenon of inhibition of growth or killing of microorganism in the living system known as antibiosis. So Pasteur in 1877 he demonstrated the phenomenon of antibiosis. After that, Alexander Fleming discovered the penicillin in 1929, and it was a breakthrough for antibacterial therapy. After that, तो पेनिसिलिन कहाँ से आ चुका है? पेनिसिलिन is obtained from Penicillium notatum and Penicillium chrysogenum in 1929. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Alexander Fleming discovered penicillin in the year of 1929. After that, Volksman
and co-worker found that the antibiotic actinomycetes found that and actinomycetes from the bacteria streptomycin in 1944. So after Alexander Fleming, after the discovery of penicillin, Waxman and co-worker found the antibiotic, or they discovered the antibiotic actinomycetes and streptomycin in 1944. Right now, natural source of antibiotic. Source of antibiotic तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, है ना. Source of antibiotic, तो first time antibiotic was isolated from natural source. Nowadays it is made synthetically, but first time antibiotic was obtained from microorganisms. So like a penicillin was obtained from Penicillium notatum, the molds, fungus, Penicillium notatum. So source of antibiotics. Source of antibiotics. So some antibiotics are obtained from fungi. जो फंगस होता है उससे ये एंटीबायोटिक आता है, जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ग्रेजियोफुल्विन. तो दीज आर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, और ग्रेजियोफुल्विन, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, है ना, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस. They are obtained from fungus. That's why source is the fungus. Some antibiotics they are obtained from bacteria. So for example is nothing but the polymyxin B, colistin, bacitracin, azithromycin, thyrothricin. These are the obtained from bacterial source. कुछ एंटीबायोटिक फंगस से आता है, कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से आता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, some antibiotics are obtained or discovered from actinomycetes. So actinomycetes they are a type of bacteria, and again it is a source of antibiotics like aminoglycosides, tetracyclines, chloramphenicol, macrolides, polyene antibiotic. अभी देखो aminoglycosides, इसमें क्या रहेगा, अमाइनो शुगर. aminoglycoside मतलब क्या, अमाइनो शुगर रहेगा इसमें. amino sugar linked with the some carbohydrate by glycosidic bond. Tetracycline means there are 4 cyclic structure, 4 ring structure. Now chloramphenicol, macrolides means large lactone ring. So there is a large lactone ring in macrolides. Polyene means multiple double bonds. So these are the antibiotics obtained from actinomycetes. Now next, antibiotics क्या है, what is antibiotics? The term antibiotics is what? The term antibiotics was first time used for the treatment of and against the bacteria or against the microorganisms. So drugs used against the microorganisms was initially regarded as antibiotics. So what are they? These are the chemical substances. These are the chemical substances produced by microorganisms themselves. Chemical substance produced by microorganisms themselves, and that chemical has a property, has a feature that inhibiting the growth or destroying the other microorganism in a high dilution. मतलब क्या कि antibiotics is a term for the chemical substance produced by microorganism themselves, but it is capable of inhibiting and destroying the growth of other microorganisms and in a high dilution, in a lower concentration. ठीक है. देखो antibiotics, the substances or chemical substances obtained from microorganism has a property, has the ability to kill the microorganisms in a small concentration. सो फादर ऑफ केमोथेरेपी, आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आ भी चुका है. फादर ऑफ केमोथेरेपी इज नथिंग बट द Paul Ehrlich. So Paul Ehrlich is known as the father of chemotherapy, and he was awarded with the Nobel Prize. Okay, after that, Sir Alexander Fleming discovered the penicillin in 1928-1929. There are few terms we have to understand before understanding the antibacterial drugs. पहला टर्म क्या है आपका? पहला टर्म है बैक्टीरिसाइडल. So what do you mean by बैक्टीरिसाइडल? बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, साइडल मतलब किलिंग. So those antibiotics or those substances which destroys the microorganism. So antibiotic or
substances which kills the microorganism known as a bactericidal. So those drug which destroys the bacteria, those drug which kills the bacteria known as a bactericidal. Example is a penicillin. Penicillin क्या है? Bactericidal है. Some antibiotics are bacteriostatic, मतलब they inhibit only growth of microorganism. तो नेक्स्ट टर्म है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या है? They inhibit the growth of microorganism. So those antibiotics, those substances which kill the bacteria known as a bactericidal, those which inhibit the growth known as a bacteriostatic. Example क्या है bacteriostatic drug का? Sulfonamides, sulfa drugs. Sulfonamides are a bacteriostatic, they are not a bactericidal. Okay, याद रखना है. Next term is next is what are the targets for antibacterial drugs? कि बाबा जो antibiotics होते हैं वो कैसे मारते हैं बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को, राइट? सो targets for antimicrobial drug and why that antimicrobial drug is not affecting to the host cell. Targets for antimicrobial drug. Now we have seen the in short microbiology and you know the cell of human. So there is a difference in the microbial cell and human cell. There is a difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. We have already seen. You might have seen in the 12th also. There is a difference of cell wall. There is a difference of cytoplasmic membrane. There is a difference of ribosome. There is a difference in the DNA RNA process of replication, transcription, translation. Right? So these are nothing but the targets for antimicrobial drug. So antimicrobial drug जो है वो सेल वॉल को टारगेट करेगा, या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को टारगेट करेगा, या फिर राइबोसोम्स को टारगेट करेगा, या फिर डीएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए मॉलिक्यूल है, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसमें जो एंजाइम्स लगते हैं, तो एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन, एंजाइम्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. So these are the targets for antibacterial drug. So enzymes required for the production of metabolite or for the replication pathways. So these are the targets for antibiotics. Now why antibiotic will not affect the host cell? So इसमें एक याद रखना है आपको, कि antibiotics are the chemical substances produced by microorganisms having capability to destroy or to kill the microorganisms with a high dilution without affecting the host. Now we'll come to the another term, antimicrobial agent. Okay, so before that, right? So nowadays in a modern chemotherapy, the term antibiotic is very less used, but antimicrobial compounds. Antimicrobial substance, or antimicrobial agent. The term antimicrobial agent is used nowadays. AMA is क्या? Antimicrobial agent. Now antimicrobial agent means what? It is the compound, it is the substance, it is the drug which can kill or which can destroy, which can inhibit the growth of microorganism without affecting the host cell, known as the antimicrobial agent. Now antimicrobial agent is the term used for instead of antibiotic. तो antibiotic की बजाय antimicrobial term use करते हैं, but this antibiotic term, as it is fitted in the minds of people, so they are using it and we are also going to use it. But antimicrobial agent is the new term. So these are maybe either produced by synthetically or maybe isolated from microorganism which are capable of destroying the other microorganism without affecting the host cell. Now success of chemotherapy depends on chemotherapy या फिर antibacterial drug therapy depends on. Chemotherapy मतलब क्या? Chemotherapy is the term, it is a parallelly also used for anti-cancer drugs. So I have already told you many times. But there is difference between cancer chemotherapy and antibacterial drug therapy, because
as I told you, there is a difference in the cell wall, there is difference in the cytoplasm, there is difference in the metabolism, there is difference in the metabolic pathways, there is a difference in the metabolites, there is a difference in the DNA, RNA, replication, transcription, translation process of bacterial cell and human cell. But that's why antibacterial drugs can selectively targets the bacteria. Antibacterial drug can selectively kill the bacteria without affecting the host cell, right? But in case of cancer, what is cancer cell? Cancer cell is nothing but your own body cell. So there is a little bit difference in the metabolism, little bit or no difference in the at a cellular level. So that's why anti-cancer drugs, they cannot kill cancer cells selectively. They also damage your normal cell. Okay. Success of chemotherapy depends on the site. First one is the site. The antibiotic जहाँ पे infection है वो site. Antibiotics should reach in an adequate concentration to the site of infection. अगर आपका ड्रग जो है, एंटीबायोटिक जो है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो है, वो साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ गया नहीं एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन में, तो आपका एंटीबैक्टीरियल थेरेपी पूरा नहीं होगा. सक्सेस ऑफ केमोथेरेपी डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट वन इज साइट. एंटीबायोटिक शुड रीच एट अ पर्टिकुलर एट अ इन्फेक्शन साइट इन अ कॉन्सेंट्रेशन एडिक्वेट टू किल द इन्फेक्शन. सेकंड है आपका कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन, रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन शुड बी एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. वही मतलब साइट ऑफ इन्फेक्शन है वही. Next is the host defense. So again, one more difference in the chemotherapy of cancer and chemotherapy of bacterial infection. So in case of bacterial infection, so our host defense system is active. अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आपका बॉडी भी उसको न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करेगा. सो होस्ट सिस्टम इज एक्टिव. होस्ट डिफेंस सिस्टम इज एक्टिव इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और माइक्रोबियल इन्फेक्शन. But in case of cancer, so cancerous cell are our own cell, so it is not a infection. So in the cancer therapy, your host defense mechanism is not there. So host defense, active host defense will decrease the dose of antibacterial required. So active host defense will decrease the dose of antibacterial drug required to treat the infection. Sensitivity. चौथा फैक्टर है ना, इन्फेक्शन टू बी ट्रीटेड मस्ट बी सेंसिटिव फॉर द एंटीबायोटिक यूज्ड. जो आपको इन्फेक्शन हुआ है वो एंटीबायोटिक को है ना सेंसिटिव चाहिए, मतलब द एंटीबायोटिक शुड किल दैट ऑर्गेनिज्म, है ना, और दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी सेंसिटिव फॉर माइक्रोबियल ड्रग, अदरवाइज इट इज यूजलेस. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स बेस्ड अपॉन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, राइट. Now antibacterial drug can be classified in the variety of way. So different way of classification are there, है ना. तो based upon the mechanism of action is there. एक तो हो गया. सेकंड हो गया according to the microorganism killed. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया को करते हैं, कुछ फंगस को करते हैं, वायरस को कर सकते हैं, लाइक दैट, है ना. सम एंटीबायोटिक्स, है ना, they kill only viruses. They are antibiotic which are killing only fungus, which are against active only bacteria, actinomycetes, parasites. According to that they are classified. Antibiotics can be classified based upon their mechanism action, based upon their organism against which they are active. They are also classified based upon the chemistry. They are also classified based upon the therapeutic index, है ना, narrow therapeutic index, etc. So there are variety of ways to classify. They are also classified based upon the source. They are also classified based upon the against the spectrum of activity, based upon the spectrum of activity, narrow spectrum, wide spectrum, intermediate spectrum, like that. तो पहला है आपका क्लासिफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो first one is a classification of antimicrobials based upon their mechanism of action, right. So you are able to see this is a bacterial cell. जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल है, सेल वॉल है आपका, है ना. इसके बाद में
ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। उसके बाद में ये राइबोसोम्स है यहाँ पे उसका डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल है, राइट। नाउ एंटीमाइक्रोबियल बेस्ड अपॉन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट वन इज अ सेल वॉल। पहले क्या है, सेल वॉल देख लेते हैं। सम एंटीबायोटिक विल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। तो एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। एग्जाम्पल इज अ, याद रखना है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक विल नॉट इनहिबिट द सेल वॉल, और वन ऑफ व्हिच एंटीबायोटिक विल नॉट अफेक्ट द सेल वॉल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स व्हिच एक्ट ऑन अ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो पहला है आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम में कौन है आपका, बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन आता है, सेफलोस्पोरिन आता है ना, मोनोबैक्टम वो भी आता है। देन आफ्टर दैट वैंकोमाइसिन। तो बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन एंड बेसिट्रासिन। These are the antibiotic which act on a cell wall, which inhibit the cell wall synthesis of bacteria। अगर सेल वॉल ही नहीं बनेगा या फिर सेल वॉल डिफेक्टिव बना, बैक्टीरिया का जो सेल का कंटेंट है, तो इफ देयर इज अ सेल वॉल है ना, जैसे मान लीजिए सम एंटीबायोटिक जैसे बेसिट्रासिन विल क्रिएट ए पोर्स। बेसिट्रासिन क्या करता है, सेल वॉल में छेद बनाता है। तो छेद बन गए तो ये जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो बाहर आ जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। लाइकवाइज दैट सम बैक्टीरियल और सम एंटीबायोटिक्स विल डैमेज द सेल मेम्ब्रेन। सो दोज एंटीबैक्टीरियल ड्रग एंटीबायोटिक व्हिच डैमेज द सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने वाले कौन है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, पॉलीमिक्सिन, निस्टैटिन। सो दिस ड्रग दे डैमेज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ, है ना, सेल मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट, सेल वॉल के पहले सेल, है ना, ये आता है ना, सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन आता है। तो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने वाले पॉलीमिक्सिन बी, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, है ना, ठीक है। सम एंटीबायोटिक इनहिबिट द मेटाबॉलिक पाथवेज इन द बैक्टीरियल सेल। जैसे बैक्टीरिया रिक्वायर्स फोलिक एसिड फॉर द मेटाबॉलिज्म, है ना। और वो बैक्टीरिया कैन नॉट यूटिलाइज रेडीमेड फॉलिक एसिड। आपने जैसे नहीं है, ह्यूमंस का है, अपन जो ह्यूमंस है वो बहुत ही सेल्फिश है ना, बाहर का भी खा लेते, अपने का भी बना लेते। तो बैक्टीरिया वैसे नहीं, बैक्टीरिया ओनली कैन यूज और ओनली कैन यूटिलाइज द सिंथेसाइज्ड फॉलिक एसिड। बैक्टीरिया विल सिंथेसाइज द फॉलिक एसिड फ्रॉम para-aminobutyric acid by folate synthetic enzyme, and folic acid is required for the variety of functions in the metabolism. So that is inhibited by sulfonamides, sulfones and trimethoprim. So they inhibit the metabolic pathways in the bacteria. ठीक है। तो some antibiotics will inhibit the replication of DNA, है ना, replication of DNA, जैसे DNA gyrase inhibitor, तो fluoroquinones, they are DNA gyrase inhibitor, they inhibit the replication of DNA. Some of the antibiotics, है ना, inhibit the DNA function or formation of RNA. तो rifampicin DNA dependent RNA polymerase को inhibit करता है। Rifampicin inhibit DNA dependent RNA polymerase and prevent the synthesis of RNA. Some antibiotics or some antibacterial drug inhibit the protein synthesis. जैसे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन है, टेट्रासाइक्लिन्स है, क्लोराम्फेनिकोल है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्लिंडामाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन्स, ये ड्रग्स क्या है, दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो बेस्ड अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे आर क्लासिफाइड। ओके, सो अगेन सेल वॉल सिंथेसिस, है ना, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, first is a cell wall synthesis inhibitor, so beta lactam, vancomycin, cycloserine, bestracin. Second is a those drug which are damaging to the cell membrane, amphotericin B, polymyxin, nystatin. Okay. Third one is a drug which inhibit the metabolism, so your sulfur drugs, sulfones and trimethoprim. Fourth drug which inhibit the replication of DNA gyrase inhibitor. Fifth one is a which impair with the function of DNA or inhibit the DNA function,
So rifampicin 6 class is nothing but inhibit the protein synthesis. Example is a tetracycline, chloramphenicol, aminoglycosides, macrolides and clindamycin. So these are the some classification of antibacterial drug based upon the mechanism of action. फिर से देखो बहुत बार आने वाला है. So again same thing I have summarized over here, but ये थोड़ा सा अलग है. ठीक है, अगेन है ना. सो फर्स्ट वन इज अ माइक्रोबियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. पहले माइक्रोबियल सेल जो है उसको इनहिबिट करने वाले कौन है? पेनिसिलिन्स, सेफलोस्पोरिन्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, फॉस्फोमाइसिन, बेसिट्रासिन, अल्फा है ना, अलाफोसास्पेरिन. दीज आर द ड्रग्स विच इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस. क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है. सेफलोस्पोरिन, पेनिसिलिन मतलब ये आपका हो गया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. ग्लाइकोपेप्टाइड, फॉस्फोमाइसिन, बेसिट्रासिन है ना, अलाफोसाफैलिन. देन आफ्टर दैट है ना, ड्रग विच डैमेजेस द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन को अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये, तो लाइपोपेप्टाइड्स है ना. Then drug which are prevent the metabolism or drug prevent the folic acid synthesis. तो इसमें फोलेट सिंथेटेज इनहिबिटर है. सल्फर ड्रग्स मिथोट्रिक्सेट है आपका, ट्राइमिथोप्रिम है ना. they inhibit the folic acid synthesis and prevent the synthesis of DNA only. Then after that है ना, तो देखो some drugs they are prevent the replication of DNA. जैसे ये DNA दिख रहा है आपको, इसका रेप्लिकेशन कौन प्रिवेंट करता है? डीएनए गायरेज इनहिबिटर है ना, क्विनोलोन्स एंड कॉमेरमाइसिन. देन सम ड्रग इनहिबिट द डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज इनहिबिशन, दैट इज अ रिफाम्पिसिन. एमआरएनए बनने का, सो दिस विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, रिफाम्पिसिन. और इसके ऊपर भी कम से कम 4 बार क्वेश्चन आ चुका है. यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिशन. ये बाद में भी आएगा मैकेनिज्म आपको, यही पे याद रखो ना. बाद में क्या, some drug prevent the RNA synthesis, so that is known as the RNA synthesis inhibitor. So example is N-acamycin. N-acamycin inhibit the synthesis of RNA. Some drug inhibit the protein synthesis of bacteria, so they are nothing but the tetracyclines, macrolides, aminoglycosides, lincomycin or oxazolidine. Again यहाँ पे mechanism of action of antibiotics, classification of antibiotics based upon the mechanism of action है ना. resistance to the bacteria or resistance to the antibiotic therapy. Now resistance कैसे बन सकता है? resistance मतलब क्या है? decreased sensitivity to the antibiotic. Now some bacteria they are natural resistant to the antibiotics. जैसे तो resistance में भी either so resistant to the antimicrobial drug है ना, resistant to the antimicrobial drug or resistant to the antimicrobial agent. Resistant to the antimicrobial agent may be either natural. So microorganisms which are never responded to the antibiotic may be due to the lack of particular enzyme. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म में कुछ एक आधा एंजाइम ही नहीं होगा तो वो एंटीबायोटिक उसको अफेक्ट नहीं कर सकता. और चेंज इन द टारगेट साइट फीचर्स, जो टारगेट साइट है वो चेंज हो चुका है तो एंटीमाइक्रोबियल को नेचुरल रेजिस्टेंट है. तो फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव बैसिलाई आर नॉट सेंसिटिव फॉर द पेनिसिलिन जी, काइंड ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस है ना. ग्राम नेगेटिव बैसिलाई दे आर नॉट सेंसिटिव फॉर द पेनिसिलिन जी, उसमें पेनिसिलिन जी कुछ नहीं कर सकता. तो नेचुरल रेजिस्टेंस टू द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट मे बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम और चेंज इन द साइट फीचर, एक्टिव साइट फीचर और टारगेट साइट फीचर
राइट, एग्जाम्पल बोला है. सेकंड में भी एक्वायर्ड, तो रेजिस्टेंस में भी एक्वायर्ड ड्यू टू म्यूटेशन और जीन ट्रांसफर. तो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक और रेजिस्टेंट टू द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ जीन और ट्रांसफर ऑफ जीन, दैट इज एक्वायर्ड रेजिस्टेंस. इसमें बहुत सारा टाइप होता है. और रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विल एक्वायर रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया विल एक्वायर रेजिस्टेंस in different way, in a variety of way. First क्या है? By production of enzyme. Bacteria can acquire resistance because of the production of enzyme. For example, जैसे कुछ बैक्टीरिया है जो एक एंजाइम बनाते हैं, बीटा लैक्टामेस. बीटा लैक्टामेस is produced by yes aureus. Aminoglycoside inactivating enzyme is produced by E. coli. तो दैट्स वाई ये साउरियस में आपका पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स इनएक्टिव है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर इनएक्टिव इन ई कोलाई बिकॉज दिस बैक्टीरिया दे हैव डेवलप्ड द वन एंजाइम, जैसे बीटा लैक्टामेज और अमाइनोग्लाइकोसाइड इनएक्टिवेटिंग एंजाइम. सो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस मे बी बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड एंट्री ऑफ एंटीबायोटिक इन द बैक्टीरियल सेल. तो डिक्रीज्ड एंट्री ऑफ ड्रग इन द बैक्टीरियल सेल है ना. जैसे इट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर रेजिस्टेंस फॉर टेट्रासाइक्लिन. जैसे टेट्रासाइक्लिन्स ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इनका एंट्री कम हो जाता है. डिक्रीज द एंट्री ऑफ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक एजेंट और एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन द बैक्टीरियल सेल है ना. थर्ड, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में बी बिकॉज ऑफ द by altering the drug target or binding site. So bacteria will reform the binding site or alter the site. जैसे alteration on ribosomes in case of aminoglycosides by altering the metabolic pathway. Acquired resistance may be because of the alteration of metabolic pathway. बैक्टीरिया क्या करेगा, सल्फोनामाइड्स फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ना. हम ये फोलिक एसिड कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते. सल्फोनामाइड्स ये क्या अपने दुश्मन है. बैक्टीरिया सोचता है कि अगर सल्फोनामाइड्स क्या करता है, यहाँ पे फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो क्यों ना अपन दूसरा कुछ मेथड बना ले फोलिक एसिड बनाने का. तो बाय अल्टरेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड बाय बैक्टीरिया यूजिंग अल्टरनेटिव पाथवे. दीज आर द different resistance, natural resistance or acquired resistance. Now steps to prevent this resistance, ये कैसे prevent कर सकते हो आप. Steps to prevent the resistance. So rational use of antibiotic. आजकल क्या है कि antibiotics और antibacterial drugs are most widely used and most misused also. क्योंकि इन्फेक्शन है भी नहीं आपको, फिर भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो है ना, irrational use. Use of antibiotic when it is absolutely required, then only use antibiotic. Use of appropriate antibiotic, जो एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन में काम आता है वही यूज करना है, दूसरा नहीं करना है. दूसरा करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा. सो यूज हाउ टू प्रिवेंट द ड्रग रेजिस्टेंस. सो यूज ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड absolutely, then appropriate antibiotic, then after that correct dose and correct duration है ना. So that will prevent the resistance. Then nowadays to prevent the resistance, combination of antibiotics are used. Say combination of antibiotic in tuberculosis, in the HIV, to decrease the resistance. Now again few terms you have to understand. If you are discussing a normal other drugs, बाकी जब ड्रग होते हैं तो उसमें एक टर्म आता है ना, मिनिमम है ना इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन. We have already seen this in general pharmacology. So for other drugs we are using this term minimum effective concentration. ये क्या होता है, the concentration of drug in the plasma required to show its pharmacological effect, that is a minimum effective concentration. But while discussing the antibiotics, जब antibacterial drug antimicrobial agent है तो उसमें क्या है कि MIC है ना, this is the term. MIC means minimum inhibitory concentration. It is nothing but the lowest concentration of antibiotic
that can prevent or kill the microorganism after 18 to 24 hours of incubation. तो देखो बाकी ड्रग्स के लिए मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और एंटीमाइक्रोबियल के लिए मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन ये टर्म है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है. सेकंड है आपका CDK, मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग. सम एंटीबायोटिक शोज द फिनोमेनॉन, सो दे kills the bacteria depending upon the concentration, so concentration dependent killing. Second term is a CDK. So concentration dependent killing or killing effect at a high concentration when ratio of peak concentration of MIC is more. तो कुछ एंटीबायोटिक क्या है, they kills the bacteria depending on the concentration, they show the concentration dependent killing है ना. जैसे फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक देखो, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोन्स, they produces the better action when they are used in the large single dose as compared to daily divided dose. तो ये ड्रग कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग शो करते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोन्स. क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आपको याद रखना है. नाउ सेकंड, कुछ एंटीबायोटिक्स क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब टाइम डिपेंडेंट किलिंग. सम एंटीबायोटिक्स दे किल्स द टाइम बीइंग फॉर व्हिच दे आर इन अ ब्लड. तो टाइम डिपेंडेंट किलिंग एक्शन मींस ऑन, तो टाइम डिपेंडेंट किलिंग एक्शन मींस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ टाइम फॉर व्हिच a drug concentration remains above the minimum inhibitory concentration. For example, beta-lactam antibiotics, penicillins वगैरह, then macrolide, then vancomycin. In this case, multiple daily doses are given and they are preferred over single dose. तो जो एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग शो करते हैं उनके लिए लार्ज सिंगल डोज देना पड़ता है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल डोसेस इन द ड्रग in the ray. But those drug which are showing time dependent killing, so you need a multiple doses instead of large dose. ये difference है, important question आ चुके हैं. Third is a term is a post antibiotic effect. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Some antibiotic inhibit or kill the microorganism even after the plasma concentration is below the MIC. मतलब क्या कि उनका ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन अभी below the MIC, but still some antibiotic can kill the bacteria. Just say example, ammonioglycosides and fluoroquinones. They kills the bacteria if the concentration is below MIC, so known as the post antibiotic effect. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, post antibiotic effect. Another term, important term you should understand is a सुपर इन्फेक्शन. कौन सा इन्फेक्शन? सुपर इन्फेक्शन और सुप्रा इन्फेक्शन. सुपर इन्फेक्शन और सुप्रा इन्फेक्शन. सो इन्फेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और ड्यू टू डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, है ना. एंटीबायोटिक है ना क्या करते हैं कि आपका जो GIT, एंटीबायोटिक्स मतलब क्या है, दे विल किल द बैक्टीरिया, है ना. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, है ना, तो आपका जो GIT है, उसमें कुछ, है ना, उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा. देयर इज अ बैक्टीरियल फ्लोरा इन योर GIT व्हिच इज नोन एज अ योर अगेन वन ऑफ द डिफेंस सिस्टम ऑफ योर बॉडी. तो आपके GIT में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी एक आपका वो क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स लाइक B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, विटामिन D एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बैक्टीरियल फ्लोरा. नाउ एंटीबायोटिक, इफ यू टेक एंटीबायोटिक विल डिस्ट्रॉय दिस बैक्टीरियल फ्लोरा. तो आपका इम्यूनिटी चला गया. तो इम्यूनिटी चला गया मतलब दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको कैच करेंगे. दैट इज नोन एज सुपर इन्फेक्शन. सो इन्फेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ एंटीबायोटिक which suppresses your defense, and antibiotic can destroy a normal
microbial flora of your GIT respiratory tract responsible for the host defense and produces the antibacterial substances known as bacteriocin. ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इज डिस्ट्रॉयड बाय एंटीबायोटिक एंड दे प्रोड्यूस बैक्टीरियोसिंस. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो जो है ना वो ज़्यादा ये करते हैं. सो दे सुपर इन्फेक्शन इज विद द ट्रीटमेंट आफ्टर द, है ना. So super infection can be there with the treatment after the broad spectrum antibiotics. Yeah. So after the broad spectrum antibiotic treatment, you are more vulnerable for super infection. So I hope you have understood the super infection. Now probiotics to prevent this, to prevent the super infection. Nowadays probiotics are used. Probiotics are used. They are the product of वाइबल और नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वाइबल एंड नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म से होते हैं. सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला प्रोबायोटिक है आपका कर्ड, जो दही होता है आपका दही. कर्ड इज अ कर्ड सबसे ज़्यादा खाने वाला प्रोबायोटिक है कर्ड. So probiotic means they are the product of viable non-pathogenic microorganisms. Lactobacillus from curd, lactobacillus from curd, then bifidobacterium, streptococcus salivaris, some enterococci, saccharomyces, boulardii. They are the examples of presently tried prebiotic. जैसे ना आपने यहाँ पे देखा एक एडवर्टाइजमेंट पे देखा होगा आपने, एक एडवर्टाइजमेंट आता है याकुट. याकुट भी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोबायोटिक. ठीक है. और आजकल यूज करते हैं ना लैक्टोबैसिलस का, है ना. जो भी एंटीबायोटिक है उसमें कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस डाल के देते हैं. क्यों? बिकॉज एंटीबायोटिक्स, है ना. तो मुझे वो समझ में नहीं आया क्यों कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हो, बट कर रहे. मतलब इफ एंटीबायोटिक कैन डिस्ट्रॉय योर जीआईटी फ्लोरा, है ना, मतलब बैक्टीरिया को मार देगा वो, और उसके साथ में ही अगर आप लैक्टोबैसिलस दे रहे हो तो मतलब वो भी मर जाएगा ना, फिर दे ही क्यों रहे हो. तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग थेरेपी के बाद में प्रोबायोटिक देना चाहिए, तो आप साथ में ही दे रहे हो, मतलब, है ना. तो मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा और इसके ऊपर मतलब ये अभी मेरे ध्यान में आया, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, सो एंटीबैक्टीरियल ड्रग, अगेन द क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, है ना. सो पहला क्लास देखो, दोज ड्रग विच इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस. तो ये सेल वॉल नहीं बनने देंगे. सेल वॉल नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया नहीं रहेगा ना, बिकॉज सेल वॉल का काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द सेल, है ना. सो दीज ड्रग विच इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, रिमेंबर पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, है ना, कार्बापेनम, वैंकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन एंड बेसिट्रासिन. तो इसको याद कैसे रहना है, कैसे करना है, देखो कैसे भी याद रख सकते हो. पीसीसी, बीएमवीसी, ऐसा कुछ याद रखो उसको. ठीक है. देन दोज ड्रग व्हिच कॉजेज द लीकेज टू फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. इसके ऊपर 4 बार क्वेश्चन आ चुका है. देखो यहाँ पे यहीं पे क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. व्हिच एंटीबायोटिक विल क्रिएट अ लीकेज और व्हिच एंटीबायोटिक विल क्रिएट अ होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन. तो देखो पॉलीमेक्सिन बी, कोलिस्टीन, पैसेट्रासिन एंड एम्फोटेरेसिन बी. दे क्रिएट ए होल्स और दे क्रिएट ए लीकेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल के अंदर का कंटेंट बाहर आ जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा. राइट. देन सम एंटीबायोटिक्स व्हिच inhibit the DNA. So DNA kinase inhibitor, ciprofloxacin on other fluoroquinolones. DNA kinase inhibitor.
इंटरफेयरिंग विद द डीएनए फंक्शन रिफॉर्मेशन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है ये, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5th क्लास है आपका, ड्रग विच कॉजेज द मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए एंड अफेक्ट द परमेबिलिटी। यहाँ पे है अमीनो ग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड अदर। सम ड्रग इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिज्म, उसमें सल्फा ड्रग, ट्राइमिथोप्रिम, सल्फोन्स, पायरिमिथामाइन, है ना, मेट्रोनिडाजोल नहीं। सम ड्रग विल इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, उसमें टेट्रा, है ना, टेट्रासाइक्लिन मैक्रोलाइट्स एंड क्लिंडामाइसिन, लिनाजोलिड, क्लोराम्फेनिकोल, है ना, ये। तो अगेन वी विल सी द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द, है ना, अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच दे आर एक्टिव, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म में एक्टिव है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक बेस्ड अपॉन द डिपेंडिंग ऑन द एक्टिव अगेंस्ट type of organism. Some antibiotics are only kill the bacteria. Some drugs will kill the bacteria. तो known as antibacterial antibiotic. Example कौन सा है? पेनिसिलिन, सामान्य ग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइट्स. Some drug will kill only fungus. Some antibiotic will kill only fungus. known as antifungal antibiotics. उसमें देखो विजोफुल्विन, एम्पोटेरेसिन बी, कीटोकोनाजोल. Some are known as antiviral antibiotics. तो इसमें अमांटाडिन, ज़ोवोडिन. Some are anti-protozoal antibiotics, जैसे क्लोरोक्विन इन मलेरिया, मेट्रोनिडाजोल, डायलोक्सोनाइड, क्लोरेट. Some drugs are removing the intestinal infection known as anthelmintic. So mebendazole, albendazole, diethyl carbamazine, parenteral. So classification of antibiotic we have seen based upon the mechanism of action. We have seen the classification based upon the organism against which they are active, है ना. अगेन डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म एक्शन, वो ऑलरेडी अपन 2-4 बार देख चुके हैं. तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, है ना, ये इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मिसरीडिंग वगैरह ये ऑलरेडी देखा है. नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द केमिस्ट्री. सो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक और डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो पहला है सल्फोनामाइड्स, है ना. इसमें SO2NH ग्रुप रहेगा, SO2NH, है ना, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव, है ना, SO2NH, है ना, SO2NH नोन एज सल्फोनामाइड्स. सल्फोनामाइड्स इसमें सल्फा डायजीन एंड अदर, है ना, मतलब सल्फा ड्रग्स. देन डेप्सोन आ गया, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड आ गया, पास, रिडिएशन, सल्फा. डायअमीनो पिरिमिडिन रिंग रहेगा इसमें. तो ट्राइमिथोप्रिम एंड पायरिमिथामाइन दे आर द डायअमीन डेरिवेटिव. क्विनोलोन डेरिवेटिव, मतलब इसमें क्विनोलोन रिंग रहेगा. उसमें नैलिडिक्सिक एसिड फर्स्ट में रहे, बाद में फ्लोरोक्विनोन्स है, नॉरफ्लोक्सिसिन, सिप्रो एंड गेटिक्लोसिन, दे आर द फ्लोरोक्विनोन्स. ये क्यूज बोलते हैं इसमें. क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोन्स. देन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग रहेगा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम. नम देखो इसमें, देखो ना, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, बैक्टम, मतलब इसे लैक्टम रिंग के लिए है ना. टेट्रासाइक्लिन्स, या इसमें 4 रिंग स्ट्रक्चर रहेगा. तो टेट्रासाइक्लिन्स लाइक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्साइक्लिन. देन ग्लाइकोपेप्टाइड, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, वैंकोमाइसिन एंड टियाकोप्लानिन. देन ऑक्साजोलिडीन डायोन्स, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. ऑक्साजोलिडीन डायोन्स, तो लिनेजोलिड याद रखना है. देन पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टिन, बेसिट्रासिन, थायरोथ्रिसिन. नाइट्रोफिरॉन डेरिवेटिव में नाइट्रोफिरेंटोइन आता है आपका, नाइट्रोफिरेंटोइन एंड फ्यूराजोलिडीन. नाइट्रोमेडाजोल डेरिवेटिव है ना, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल. ठीक है, देखो आगे देखो, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. तो क्लोरोम्फेनिकोल इज नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव. अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल बात मालूम होने चाहिए आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन वगैरह.
मैक्रोलाइड्स में माइसिन में इरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, प्रोक्सिथ्रोमाइसिन, इलिथ्रोमाइसिन। लिंकोसामाइड में लिंकोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, ये भी क्वेश्चन आता है। सम आर द निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव जैसे आइसोनियाजाइड, पायरिसिनामाइड, इथेनोनामाइड यूज्ड इन द टीबी, ये सब टीबी में यूज होती है। पॉलीइन एंटीबायोटिक, इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे, निस्टेटिन, एम्फोटेरिसिन बी, एमाइसिन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। एजोल एंटीबायोटिक्स, इसमें माइकोनेजोल, कीटोकोनेजोल, फ्लूकोनेजोल, ये सब क्या है, एंटी फंगल है। मिसलेनियस ड्रग में रिफाम्पिसिन, स्पेक्ट्रोमाइसिन, इथाम्बुटॉल, साइक्लोसेरिन, थायोस्टाजोन, क्लोफिजनामाइन, रिजोवोलिन, तो ये मिसलेनियस में है। Based upon the therapeutic index, again antibiotics are divided into three classes. Antibiotics are divided into three classes based upon the therapeutic index, है ना। तो कौन सा थेरापेटिक, किसका इंडेक्स ज्यादा है? थेरापेटिक इंडेक्स इज द सेफ्टी ऑफ मार्जिन, आपको पहले ही हो चुका है ये। तो ड्रग्स व्हिच आर हैविंग और एंटीबायोटिक्स व्हिच आर हैविंग हाई थेरापेटिक इंडेक्स, सो एंटीबायोटिक्स हैविंग हाई थेरापेटिक इंडेक्स. Example is the penicillin, cephalosporins, macrolide, and penicillin, cephalosporin, macrolide. They don't need therapeutic drug monitoring, है ना, इनको therapeutic drug monitoring नहीं लग रहा है क्योंकि ये high therapeutic index है. Now low therapeutic index drug, इसमें देखो these drugs they are requiring the moderate थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, मॉडरेट थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. इसमें अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन्स है एंड क्लोरामफेनिकोल है. तो अमीनोग्लाइकोसाइड का एडवर्स इफेक्ट होता है, दे विल डैमेज योर 8th cranial nerve एंड किडनी आल्सो. तो दे क्या करते हैं, डीपनेस करते हैं. टेट्रासाइक्लिन्स दे डैमेज द लिवर, किडनी एंड एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट है, टेराटोजेनिक है. क्लोरामफेनिकोल इज आल्सो बोन मैरो सप्रेसेंट. तो दे आर द लो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग. अभी थर्ड वाला कैटेगरी आपको वेरी लो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग. तो वेरी लो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग, इसमें क्या है कि थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड. Therapeutic drug monitoring is absolutely required. So very strict therapeutic drug monitoring is required because they are the very low therapeutic index drug and they can cause adverse effect. ठीक है, तो वेरी लो थेरापेटिक इंडेक्स, इसके ऊपर भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. तो पॉलीमिक्सिन बी has some neurological and renal toxicity. Vancomycin, deafness and kidney damage. Amphotericin B, kidney damage and bone marrow and neurological toxicity. So based upon the therapeutic index, again antibiotics they are divided into 3 classes. Antibiotic having high therapeutic index, antibiotics having low therapeutic index, antibiotic having very low therapeutic index. So is it clear? Okay. Now again, resistance developed है ना by mutation or gene transfer to the antimicrobial, है ना, resistance developed by mutation or gene transfer to the antimicrobial agent. तो मतलब I have told you what you mean by resistance. अगर antibiotic if they becomes ineffective in case of infection, तो अगर एंटीबायोटिक अगर इन्फेक्शन में इनइफेक्टिव बनता है तो उसका कारण हो सकता है, वन ऑफ द रीजन इज अ रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय म्यूटेशन और जीन ट्रांसफर टू द antimicrobial agent, मतलब antibacterial drug. So either it may be a single step mutation, मतलब क्या सिंगल स्टेप, मतलब सिंगल जीन म्यूटेशन
Resistance example, enterococcus to the streptomycin. So single step mutation current enterococcus, they become resistant to the streptomycin. E. coli, they have become resistant to the E. coli staphylococcus aureus to the rifampicin due to single point mutation. multi step mutation मतलब क्या? Number of gene modification which decreases the sensitivity of antibiotics, है ना? तो यहाँ पे multiple gene और number of genes they are modified. Example, resistant to the erythromycin, tetracyclines and chlorphenicol developed by many organisms by this multi-step mutation. तो ये ऑलरेडी आपने देखा है ट्रांसफर ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. कॉन्जुगेशन मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन देखा है आपने, लाइव टू लाइव बैक्टीरिया, मल्टीपल जीन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन. ट्रांसडक्शन मतलब क्या है? सो ट्रांसफर ऑफ, है ना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ए बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वाया वायरस बैक्टीरियोफेज. So Staphylococcus aureus develop a resistance because of the transduction. Transformation मतलब क्या है? तो है ना, from dead bacteria to live bacteria, pneumococci and Neisseria, they develop a resistance by this way. Super infection क्या है आपने देखा है already. So when you take antibiotic, so your normal bacteria flora of GIT will be destroyed, which is the defense system of your body. And because of the decreased immunity, you will become susceptible for the, or you will become vulnerable for the new infection, opportunistic infection known as a super infection or secondary infection. ठीक है? तो जैसे एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया, दिस इज वन बैक्टीरिया, this is the second bacteria. So if gene transfer from live bacteria to live bacteria and live to live via 6 plus known as a conjugation, second a gene transfer मतलब DNA dead from a dead bacteria, ये bacteria dead है, so from a dead bacteria to the live bacteria is known as a transformation. And gene transfer via one bacteria to other bacteria via virus or bacteriophage is known as a transduction. याद रखना. Choice of antibiotics recommended in the treatment of some condition. देखो जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, जैसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस. ए ग्रुप के ये क्या करते हैं? फेरेंजाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ फेरेंक्स, ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फेक्शन ऑफ ईयर, है ना, साइनसाइटिस, सेलुलोसाइटिस, है ना, इम्पेटिगो बैक्टीरियमा, उसमें पेनिसिलिन आर इफेक्टिव. और बाद में अल्टरनेटिवली इरिथ्रोमाइसिन फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिक्स आर आल्सो इफेक्टिव. तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ये को क्या करते हैं? बैक्टीरियमिया करते हैं, एंडोकार्डाइटिस करते हैं, मेनिंजाइटिस करते हैं. तो इसमें एमोक्सिलिन और पेनिसिलिन और अमीनोग्लाइकोसाइड, ना, और अल्टरनेटली फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन. ये सॉरियस का इन्फेक्शन अगर है, ये सॉरियस ये क्या करता है? फुर्निकल, सिलुसाइटिस, बैक्टीरियमिया, ओस्टियोमाइलिटिस एंड न्यूमोनिया. तो ओस्टियोमाइलिटिस मतलब बोन का इन्फेक्शन. तो मिथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसमें जो सेंसिटिव है उसमें पेनिसिलिन में कोक्सीसिलिन, डाइकोक्सीसिलिन, और अल्टरनेटिव फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन और वैंकोमाइसिन. जो मिथिसिलिन रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये में सारे इन्फेक्शन. मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये में सारे बोलते हैं उनको. इन दैट केस वैंकोमाइसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, और अल्टरनेटिवली सिप्रोबाउलसिन, रिफाम्पिसिन, है ना, ये यूज करती है. बाद में आपको पता चलेगा, बट अभी ये सिर्फ प्राइमरी इंफॉर्मेशन है. निमोनिया, निमोकोकस इन्फेक्शन क्या करता है? निमोनिया करता है, साइनसाइटिस करता है, एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस करता है. इसमें पेनिसिलिन, क्लोक्सीसिलिन, पेनिसिलिन, अमोक्सिलिन आर फर्स्ट, है ना, दे आर द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस. अल्टरनेटिवली फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन.
पेनिसिलिन रेजिस्टेंट निमोनिया वगैरह है तो उसमें सेप्ट्राक्सोन है ना, सेपोटैक्सिम, वैंकोमाइसिन यूज कर सकते हो। अल्टरनेटिवली क्लिंडामाइसिन, कोट्रामाजोल। एंटेरोकोकस अगर है, एंडोकार्डाइटिस करता है, पेनिसिलिन जी एंड जेंटामाइसिन इज द फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ ड्रग। सेकंड इज वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन। गोनोकोकस पेल्विक इन्फेक्शन करता है, गोनोकोकस, उसमें गोनोकोकस क्या करता है, गोनोरिया करता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, तो उसमें भी पेनिसिलिन जी है ना, जेंटामाइसिन और सेप्ट्राक्सोल। सेकंड चॉइस क्या है ना, सेकंड चॉइस है आपका अम्प्लिसिलिन, है ना, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस है वो, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ गोनोरिया अभी क्या है, सेप्ट्राक्सोल। सेकंड चॉइस है एम्प्लिसिलिन, डोक्सासिक्लिन, डोक्सासाइक्लिन और एथ्रोमाइसिन। मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस करता है, ड्रग ऑफ चॉइस का है सेप्ट्राक्सोन, सेफोटैक्सिन। अल्टरनेटिवली पेनिसिलिन जी, क्लोराम्फेनिकॉल। अगर कैरियर स्टेट का है तो रिफाम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस। मिनोसाइक्लिन इज अनदर चॉइस। क्लोस्ट्रिडियम डिप्थीरिया करता है ये, ड्रग ऑफ चॉइस इज इरिथ्रोमाइसिन। और सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन। देन क्लिंडामाइसिन। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनस करता है आपको, पेनिसिलिन जी एंड डॉक्सासाइक्लिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अल्टरनेटिवली क्लिंडामाइसिन। क्लोस्ट्रिडियम डिफिकली, क्लोस्ट्रिडियम पायरोजेंस, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकली, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस कॉजेज द स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, मतलब आपका जीआईटी इन्फेक्शन, गैस गैंग्रीन करता है। ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल, पेनिसिलिन जी। अल्टरनेटिवली वैंकोमाइसिन, सेपोटैक्सिन, क्लोराम्फेनिकॉल, ये कर सकते हो। ये दिया है पूरा, तो विल सी टुमारो, कल देखेंगे ये ना।